So first 61, which one of the following does not hold? First, norm of xy is less than norm of x minus norm y in a non-linear space x omega. এটা তো ডাইরেক্ট ফলস আসলা ହେଲା ତାର ପ୍ରୁଫ ଭିତରେ କରିଥିଲା norm of x को ଆମେ କାଁ करथला norm x minus y अच्छा डेफिनेशन आगे ऑप्शन पढ़ी दो काइंडली ऑप्शन ए भी सेम टा in a non-linear space norm is a continuous function that is continuous, not only continuous, this is uniform continuous. इतार प्रूफ मुई नोट्स रो जति देतली फास्ट लेक्चर ही तुमको इतार प्रूफ टा देतली हला मुई नाइ कहबा जेटा नाइ देतली तो फास्ट लेक्चर ही तुमको जिनिसटा देतली ई जिनिसटा ऑप्शन ए जेंडा से फॉल्स पच रही छे और ई जिनिसटा ऑप्शन बी जेंडा से नॉर्म इज ए कंटीन्यूअस एंड यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस लिप्सिस पच रही छे. सो इतार प्रूफ टा हला norm of x is equal to norm of x minus y plus y which is less than norm of x minus y plus norm of y. इधर को हम इपड़ को शिफ्ट कर देना लेफ्ट साइड को norm of x minus norm y is less than norm of x minus y से इने को हो जाना ग्रेटर देन सिंबल दे छे सो इन भी फॉल्स पे गेलो आ बी लाइक यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस लागे हमें x नहीं की y नहीं थे ना इंटरचेंज कर देना रोल इंटरचेंज कर देले फर्स्ट की norm y norm x से था which is less than norm xy इनको लिखि पाले ड्यू टू symmetricity. So norm x minus norm y is जेहेतु ने पॉजिटिव या नेगेटिव असला होल मॉडुलस का आला less than norm x minus y, that is fx minus fy is less than norm x minus y. Record, this is the definition of Lipschitz. This function is Lipschitz, hence uniform continuous, and also uniform continuous imply continuous. So option B true. C lagi, this defines a norm. It is the classical example. D2 this also defines a norm. This both defines norm. और norm define लगे हमें प्रूफ का करूथला जे फास्ट के हमें करथला नॉन नेगेटिविटी चेक करथला मैंने किछ चेक नहीं करी निजे निजे हेल्प चेक करबो. norm x greater than equal to 0 करथला norm x is equal to 0 if and only if x is equal to 0 alpha x is equal to alpha bar norm x on this triangle inequality less than norm x plus norm y. आउ इना में ट्रायंगल इनइक्वालिटी कार हेल्प रे थ्रू मिनकॉस्की इनइक्वालिटी हमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी देखे परवा बाकी सब प्रॉपर्टी टा इजीटा ई जगह किछि मिनकॉस्की इनइक्वालिटी देखेबा नै ना हमें इने ई रिजल्ट हेल्प करबा सुप्रीमम ऑफ a plus b is less than सुप्रीमम ऑफ a plus सुप्रीमम ऑफ b. ई दुइतरा हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी सो हे जबा सो ई हिसाब रे हमें ई दुइटा भी ट्रू ऑप्शन देखे परमा. नेक्स्ट 62 अगेन एटा भी डायरेक्ट थ्योरम मा प्रीवियसली पढ़ी छे आ मो नोट से ऑलरेडी दै छे हला मोर नोट्स की मोर क्लास को खराब नहीं करबो. सो इक्विवेलेंट नॉर्म्स ऑन ए वेक्टर स्पेस x do not define same topology. This defines same topology. It a false statement. A norm on a vector space x is equivalent to a norm 0 on x if there are positive numbers a and b such that x belongs to a norm x0 less than norm x less than equal to b x0. এটা true কাই লাগি finite dimensional norm space রে এটা this is the definition of equivalent norms আর কিছু নাই just definition of equivalent norms. See, in a finite dimensional norm space every norms are equivalent से कहू जे does not equivalent so false. এটা भी स्टैंडर्ड हमें गुडे लेमा ने की प्रूफ करथला मुई ऑलरेडी एक्सप्लेन करी जे प्रीवियसली भी बहुत जगह एक्सप्लेन जिनिस को करथिबी. इक्विवेलेंट नॉर्म्स डिफाइंस सेम कची सीक्वेंस ये कहू जे डिफरेंट नहीं सेम कची सीक्वेंसिंग करबे इने जे कची इने भी कची इने जे कची इपटे भी कची सो डी हला फॉल्स ये हला ऑप्शन बी. नेक्स्ट 63 बेसिकली जतकी एटा प्रीवियस ईयर जे पढ़थो जानथो जतकी थ्योरम पढ़िथिलो क्लोज ग्राफ थ्योरम ओपन मैपिंग थ्योरम सही ओपन मैपिंग रे अलगा वर्जन थिला बाउंडेड प्रिंसिपल आ यूनिफॉर्म बाउंडेड प्रिंसिपल जस्ट डेफिनेशन को ही भर्ती दे छै आ डेफिनेशन किछटा एरर करै छै तंगो डेफिनेशन केते क्लैरिटी अछि से पछरै छै. सो करेक्ट पछरै छै. फर्स्ट क्वेश्चन a to b be Banach spaces and t from a to b is a linear transformation such that t has a closed graph.
t पाखरे होचे का আছে क्लोज ग्राफ देन t is continuous. This is nothing but हमर काला क्लोज ग्राफ थ्योरम का पड़ितला if x and y are Banach spaces and t from x to y is a linear map then t is bounded if and only if g of f is closed in x cross y काम पड़तला closed graph closed हेले t टा bounded bounded implies continuous continuous हेले graph is bounded same जिनिस ही कहै छै जे close होउ जे imply t is continuous true b c d just टिके टिके तांकर मिस्टेक चेक करबा थेला for b को आसु let a and b be Banach space and t from a to b a one to one continuous linear transformation then t inverse is not continuous से कहै छै जे यदि a to b 1 1 आउ कंटीन्यूअस हला देन t इनवर्स केतळे भी कंटीन्यूअस नाही होए बाकी हमें ओपन मैपिंग थ्योरम काम पड़तला if x and y are Banach space and t defined from x to y is a bounded linear subspace or continuous then subspace t is surjective if t is surjective then t is an open map that is t inverse is continuous यदि 1 1 आउ आमे एंता एग्जांपल टे चूज कला जेंटा 1 1 आउ 1 2 हला देन बाय ओपन मैपिंग थ्योरम दिस इज काहे जबा कंटीन्यूअस जा बाकी से कहू जे नॉट कंटीन्यूअस बाकी यदि से खाली इज निष्ठा देथैता ओनली 1 1 देथैता आउ हमकु ऑनटूनेस ओमिट ही करथैता नॉट ऑन टू होइथैता देन से केस रे हमकु ई टाइप रो एग्जांपल मिलिथैता एटा उडा एग्जांपल t r2 r2 नै जे x to x नै जे ई टाइप रो एग्जांपल मिलिथैता इतार प्रूफ नेसेसरी नै मो रिवीजन सीरीज रे भी तार प्रूफ देइथि बाकी कहूचे ओनली 1 1 जेथेता देन द स्टेटमेंट इज ट्रू ने जेहेतु ये ऑन टू टाइप रो फंक्शन में हमें कंसीडर करि पारमा बाय ओपन मैपिंग थ्योरम दिस इज कंटिन्यू सो ई चक्करिया फलसला सी द आउट इंटरेस्टिंग ऑप्शन a and b are Banach space and ti be non-void family of bounded linear transformation from a to b और जेंदा को हमें दाउ sequence of bounded linear operator कहउतला then if supremum of tix that is this is pointwise bounded then pointwise bounded imply हमें कहां पड़तला uniform bounded this is also finite false जिबा simple definition वाला uniform bounded principle la if x is a Banach space and a alpha is a collection of bounded linear operator from x to norm linear space y in a f x to y ये only norm space ही काम दबा ये Banach दीजिए okay then if it is pointwise bounded that is supremum of a alpha x is finite then it is also uniformly bounded then the operator is bounded बाकी ये कहू जे operator is unbounded so this is false d दा simple इतार corollary एटा भी मैं ऑलरेडी रिवीजन सीरीज तुमको देइछे let a and b be a Banach space and let t and n tends to 1 to infinity be a pointwise convergent sequence of bounded linear transformation from a into b then the mapping tx is equal to just कहि जे converging टा is not a bounded linear transformation this is a bounded linear transformation इता को हम bounded principle कहउतला और corollary of uniform bounded principle if fn be a set of bounded linear functional on a Banach space x such that fnx converges to f of x for all x belongs to x then f is a bounded linear functional एला statement f is a bounded linear function से कहू जे not so एतली false हला आउ प्रूफ इजीटा टिके जस्ट अप्रोच कहि दउ जे fnx टा हो जे f of x को जाउ जोली कहू जे this इन tnx नहीं जे f of x नहीं जे that is fnx is bounded माना pointwise bounded there exists kx such that supremum of this supremum of fnx is finite by uniform bounded principle pointwise implies uniform given that x टा Banach space हेतुआ इने से ऑलरेडी a और b Banach space देइछे so by uniform bounded principle this operator is bounded that is supremum of fn is bounded चलो x के supremum of fn is bounded हमको कहां देखेबा छै this f is bounded देखेबा छै ना so norm f को हमको bounded देखेबा छै norm f रो डेफिनेशन काना supremum of mod fx by norm x is equal less than 1 इने less than equal to 1 norm f रो हमें वेराइटी एग्जांपल पढितला फिर एक जे देखे दउ छै norm f रो हमें का पढितला
norm f रो हमें variety type रो definition पढ़तला first definition पढ़तला norm x is equal to 1 f of x पढ़तला supremum of not just supremum mod f of x by norm x एटा ही पढ़तला supremum of norm x less than 1 mod f x एटा भी लिखतला तो एंती कि हमें तीनटा टाइप रो डेफिनेशन पढ़तला तो हमको प्रॉब्लम रे सुटेबल जेंटा लागबा से हिसाब रे हम यूज करना एटा फंक्शनल डाला आर रे डिफाइन है एटा को हमें ऑपरेटर नॉर्म बोल के कहतला सो ई जिनिसटा को हमको बाउंडेड देखावा छै द सुप्रीमम ई जिनिसटा को बाउंडेड देखावा छै सो सुप ऑफ fn ऑलरेडी ने बाउंडेड पाइलो दैट इज सुप्रीमम ऑफ n ई fn को हमें का लिख पारमा दिस ई नॉर्म लिख पारमा सुप्रीमम ऑफ नॉर्म x लेस देन 1 आउ fn x आउ ई जन fn x ई भितरडा हमें ताऊ इंटरचेंज कर दला सुप्रीमम ऑफ नॉर्म x लेस देन 1 इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ n fn x सो ई भितरडा जेतु ये कहला पॉइंट वाइज बाउंडेड दिस सुप्रीमम ऑफ n fn x इज पॉइंट वाइज बाउंडेड सो सुप्रीमम ऑफ x norm x less than 1 is equal to kx हम एटा नै जो आउ जेतु norm x को हमें less than 1 नो जो this kx can be made small from the k काइंडली इन जन kx हमें नो जो this can be bounded by some constant hence this function norm f is bounded that is norm t is a bounded linear operator से कहू छै not बोल की नेक्स्ट 64 भी बेसिकली जे प्रीवियस ईयर देखि तो एटा आराम से विदिन 2 सेकंड हो जाइतबा से कहू जे व्हिच इज ऑफ द नॉट ए Banach space जानी जो LP is a Banach space L infinity is a Banach space CAB is a Banach space so obviously पंचला the polynomial space is not a Banach space काहे लगी this polynomial space रो जतो हम क्लोजर लमा this is CAB this is not complete when LP L infinity CAB these are complete norm space hence these are Banach space दर प्रूफ तो मैं तुमको दे नहीं प्रूफ लगे तुम सब बुक फॉलो करो next 65 which of the following is not correct dual space पूछ रही है dual space of Rn is Rn true dual space of L1 is L infinity true dual space of C0 that is all sequence converging to 0 is C this is false काहे लगी C0 रो जेतले हमें देखसुन dual space this is L1 that is C star रो भी same C रो भी same को हो जबा this is sequence converging to 0 this is the convergent sequence just sequence n convergent करतबा not necessarily हमें जानछु C0 is contained in C और dual space of LP is LQ जेतले समटा 1 is C और condition 1 is 1 p less than infinity एतार प्रूफ तो कहने दे बेसिक प्रूफ मु जस्ट रिवीजन सीरीज रे तुमको ये एग्जांपल जगह देइ छै देखे दउ जे Rn star or Rn LP star or LQ L1 star or L infinity or L infinity star is not equal to L1 this example C0 star is equal to L1 C star और इने भी ताको बतैथिली even if the dual space are isometric then the space is not isometric similarly LP star is equal to LQ star मैं already example देइ छै हला आ ई जिनिस मान हमें ऑलरेडी प्रीवियस ईयर रे सॉल्व करी के आछो एंती नै कि हमकु ने नो 8टा क्वेश्चन पछरे देइ जे दीज आर सब सेम फंक्शनल नो किछि पछरे नै हालांकि ओपीएससी नो पछरेबा काली ओपीएससी रे 20 टा ना तो 12 टा रु 15 टा तमे सेम पाइबो बाकी रिपीटेंस पाइबो नेक्स्ट 66 a reflexive non-linear space is never complete तो क्लियरली फॉल्स काहे लगी a non-linear space reflexive if and only if it is complete यदि reflexive हेगला ताले से complete हवा से कोई never complete false every non-linear space is reflexive not necessarily finite दरकार finiteness दरकार every finite dimensional non-linear space is reflexive every Hilbert space is reflexive this is true L1 is reflexive no L1 is not reflexive काहे result पड़िथिला if a separable space has a non-separable dual space then it cannot be reflexive L1 star is equal to L infinity हम जानछु L infinity L1 टा काना separable इतार पाखरे उडे countable dense set अच्छे
बाकी L infinity is not separable तार प्रूफ भी मैं बहुत जगह देती L infinity टा separable नहीं कही की hence L1 is not reflexive से कोई reflexive this is also false आउ ई सब जाग स्टेटमेंट मुई ऑलरेडी तुमको रिफ्लेक्सिव स्पेस है तुमको देई जे मुई सब ना देखि भाई गुटे प्रॉब्लम देखै जे तुमको दिस Rn is reflexive norm space is reflexive it is complete every finite dimensional norm space is complete LP is reflexive 1 to infinity LP is reflexive every Hilbert space is reflexive non reflexive wala CAB L1 L infinity C and C0 are not reflexive also result a separable norm space X with a non separable dual space X cannot be reflexive L1 रा example दिया है if X is a norm reflexive then X dash also reflexive dual space also reflexive if X is a Banach space then its dual is also reflexive सब होता है ये जे तुम ठीक से फॉलो करथबो तो प्रॉब्लम नहीं हेतबा आउ नेसेसरी खाली थ्योरी फॉलो करले नहीं तुम जदी प्रीवियस ईयर करथबो एटा काइटा सिंपल प्रीवियस ईयर को कंबाइन करि दिया है मो ये नोट्स टा बनै छै वेरियस प्रीवियस ईयर को नै की मिक्स करि बनै छै मैं मोराडो भी नहीं बनै नेक्स्ट which one of the following is a Hilbert space क्लियरली जाना पड़ू जे Rn is a Hilbert space हम जानि छु Rn टा हमर यूजुअल Hilbert space complete inner product space Hilbert space आर ना complete inner product space L3 एटा क्लियर बुल हला LP is Hilbert space if and only if p is equal to 2 एटा प्रीवियस ईयर हम केते टाइम रे करि L1 एटा तो a और c तो इनु कैंसिल हो गेले LP is a Hilbert space if and only if p is equal to 2 and CAB is not a Hilbert space काहे लगी CAB टा कंप्लीट नहीं with respect to integral CAB रे हमें का डिफाइन होता है इनर प्रोडक्ट स्पेस दिस fx gx bar dx एटा डिफाइन करथला ना fg को this is not complete काहे लगी CAB रो क्लोजर हमें देखमा LPAB hence this is not an Hilbert space इधर भी एग्जांपल वन बेसिक एग्जांपल देई को आइतला एग्जांपल्स Rn रो दिया आइतला Cn रो दिया आइतला MNC रो दिया आइतला CAB रो दिया आइतला polynomial space रो दिया आइतला फर्दर L2 रो दिया आइचे small l2 इटा Hilbert space रो प्रोटोटाइप LP space is not an inner product space hence not an inverse space इने खाली p is only p is equal to 2 लगी पाइतला एटा बहुत टाइम प्रीवियस ईयर रे भी हमें ऑलरेडी करिछु नेक्स्ट 68 सेम जिनिस बहुत टाइम प्रीवियसली पचरै जे मैं रिवीजन नोट से भी तुमको देई जे मेन कथा हला फंक्शनल अटेंड करबार सबनु सुटेबल हला आइदर थ्योरी पढो नले पीआईक्यू करो प्रीवियस ईयर करो हमर एग्जाम रे ओपीएससी हो के एसएसबी रो हार्ड क्वेश्चन नहीं पचाएबा हालांकि ओपीएससी रे पचरेबा 4-5 टा हला तो जेंटा हार्ड लागला सर देख दी जीवो बाकी इन द स्टेटमेंट जदी असला तो इश्यू नहीं आसबा कथा if y is a closed subspace of Hilbert space then y is y dual y complement ro orthogonal complement in R3 3 units vector 1 0 0 0 1 0 0 0 1 कहो do not form an orthonormal set এটা standard orthonormal set this is हमें का standard orthonormal basis कहतना मान orthonormal basis inner product 0 and norm of all these vectors are 1 for any subset M not equal to phi of Hilbert space H the space M is dense in H if and only if M रो orthogonal complement हला 0 this is also true एटा प्रूफ बेसिकली प्रूफ नहीं दे बाकी रिवीजन सीरीज में सब each स्टेटमेंट को रेस्पेक्टिव सेक्शन में मेंशन करी आछे नुआ किछ नहीं पड़ी an orthonormal set in an inner product space is linearly independent this is also true जबकि सब ऑर्थोनॉर्मल सेट हला लिनियरली इंडिपेंडेंट एशन इतार प्रूफ सिंपल देखाइ छै अल्फा x मनकर x1 x2 xn देखेली इतागु आंकु का देखबा छै लिनियरली इंडिपेंडेंट अल्फा इ जे देखबा छै सिंपली फर्स्ट के x2 रे मल्टीप्लाई कर देला इ सब जाओ काना जेबे x फर्स्ट के x1 रे मल्टीप्लाई करो x1 रे मल्टीप्लाई कर देले इन x1 रे मल्टीप्लाई करले जेतु ऑर्थोनॉर्मल x2 ई सब कटि गेले दिस सिंपल का पाइला अल्फा x1 इज इक्वल टू 0 ऑर्थोनॉर्मल दीजिए दिस इज यूनिट मॉडुलस ई x1 xi का ना ऑर्थो दिस इज 1 हवा इनर प्रोडक्ट करले सो अल्फा 1 इज इक्वल टू 0 सिमिलरली x2 गला अल्फा 2 0 सिमिलरली xn गला अप टू अल्फा n इज इक्वल टू 0
So this is an orthonormal set or orthonormal sets are linearly independent. इने जन स्टेटमेंट मान पाउचो ये नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन है आसबा तो इसलिए मैं सब स्टेटमेंट डिटेल्स रे डिस्कशन कली आउ फर्दर आउ थरे कहूचे जाइए रिवीजन सीरीज टिके फॉलो करबो नहले जे जति लैंग्वेज पिकअप करने पारबा मैं तुमको तो पीडीएफ शेयर करी जे ना तो पीडीएफ फॉलो करो आउ फंक्शनल ना हेबा कहले थोड़े ना हबा 20 मार्क पाइबो क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम रे आउ जदी स्टेटमेंट बेस पढू जदी स्टेटमेंट बेस भी तुम नहीं पाई पारबो तो का कहिमा जदी प्रॉब्लम हालांकि ओपीएससी रे तुम 15 टा डायरेक्ट पाइबो कि प्रीवियस ईयर वे रे पाइबो आउ 5 टा न्यू क्वेश्चन पाइबो से 5 टा न्यू क्वेश्चन नाइले नहीं बाकी 15 टा तो अटेम्प्ट करबो ना सो एतकी ही नेक्स्ट आको कंटिन्यू करमा